focus this evening. It's coming to us on the Delhi acid attack. Sources are now telling us that both the accused have been arrested by the police. A 17-year-old student in Delhi's Dwarka was attacked by two men earlier today. She had suffered burns in her neck and eyes. The first accused was nabbed earlier today, and the second one has been nabbed, I think, a couple of minutes ago, is what we are being told. Let me go straight across to Anuj, who is joining us on the broadcast with more details. Anuj, अब आप हमको बता रहे हैं कि जो दूसरा absconder था, लड़का था जिसने इस लड़की पे एसिड फेंका, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों लड़के हैं कौन और इन्होंने ये एसिड इस लड़की पे फेंका क्यों था? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए, सुबह ही पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया था और अब पुलिस का यह कहना है कि दूसरा आरोपी भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस का यह कहना था कि आरोपी पीड़ित लड़की को जानते थे और इतना ही नहीं, ये जो दोनों आरोपी हैं वो एक ही कंपनी में काम करते थे। जाहिर तौर पर अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार मोटिव क्या था, किस वजह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है जिस तरीके से सुबह के वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था और आरोपियों ने काफी चालाकी से, कहा जा सकता है कि एक साजिश के तहत वो उस स्पॉट पर आते हैं, बाकायदा बाइक पर आते हैं और अपने चेहरे को इस तरीके से ढके रहते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। लेकिन चूंकि पीड़िता के साथ उसकी छोटी बहन भी वहां पर मौजूद थी, उस बहन ने बयान दिया, दोनों को उसने पहचाना, जिसके बाद दोनों के बारे में बाकायदा पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को सुबह ही डिटेन कर लिया था और अब पुलिस का यह कहना है कि दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। अब इनसे पूछताछ किया जा रहा है, हालांकि दोनों के एज को वेरीफाई किया जा रहा है और यही वजह है कि दोनों के नाम के बारे में पुलिस अभी नहीं बता रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं ये दोनों नाबालिग तो नहीं है, इसलिए अभी इन दोनों के एज को वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है जिस तरीके से सरेआम इन दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़ित लड़की जो है छात्रा, वो अपनी बहन के साथ एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जा रही थी, उसी वक्त करीब 7:30 बजे के आसपास इन दोनों ने उस पर एसिड अटैक किया, जिसके बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई। उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस बाबत हमने देखा कि किस तरीके से महिला आयोग की अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तमाम सवाल खड़े किए। एक बार फिर से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस पर सवाल खड़े होना लाजमी था और यही वजह थी कि पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले में काम कर रही थी। और अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा फेलियर तो लॉ का यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं, सेल ऑफ एसिड रेगुलेटेड है, तो इतनी आसानी से इन दोनों लड़कों इन दोनों आदमियों को वो एसिड मिल कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। थैंक यू वेरी मच अनुज फॉर ज्वाइनिंग अस। नाउ दैट वाज द ब्रेकिंग न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। बोथ द men who were behind this acid attack have been arrested. But let me also put this story in context for you, give you a sense of what that family is going through right now. Imagine you're the parent of two young girls in Delhi. Both of them are heading to school on a Wednesday morning. They have an exam to write. You have just seen them leave for the metro station together. But moments later, your younger daughter comes running into the house. She says her sister has been attacked on the streets of your city. When you reach the scene, you find your 17-year-old daughter withering in pain. Her face has been burnt in an acid attack. Just put yourself in that father's shoe. Think about what that young girl has gone through in a matter of minutes. One moment, she is happily going to school with her sister, probably a little scared about writing the exam, and the next thing you know is she is battling for her life in a hospital. Why? Because some predator with a very fragile ego wanted revenge. Because his idea of jilted love was amplified by this country's toothless laws. What I just described has happened in Delhi today. The proof is on your screens. That young girl is still at the Safdarjung hospital. She has burns on her face, her neck, and her eyes.
Just think about how easily these men managed to ruin a young girl's life. They came on a motorbike, they flung acid on the girl's face and fled the scene. Thank God there was a CCTV camera to capture that entire incident. If not, they may never have gotten away with this barbaric act. They could just have gotten away with this act. Like we have been saying all day on this channel, this is a national shame. This is a national curse, actually. How is it that you can get a bottle of acid over the counter when the Supreme Court has banned it way back in 2013? Where are the police officers and the district officials who are responsible for keeping acid off the streets? I have some jarring data for you about this whole situation. But first, listen in to all the political reactions that have come in on the story. एसिड अटैक, दिन दहाड़े एसिड अटैक करना दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि महिलाओं पे कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं और उनको किसी तरीके की सजा नहीं मिलेगी और कानून के हाथ इतने लंबे नहीं है कि उनको पकड़ पाए और अगर पकड़ भी लिया तो उनको कन्विक्ट कर पाए। तो ये तो सरकार की प्राथमिकता दिखाता है कि जब आप महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं, इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। That's a classic response that is coming in from politicians. The parliament is in session. They say they are outraged by today's acid attack. In fact, we have BJP MPs who are saying, and we'll play out Parvesh Verma's bite for you as well, BJP MPs saying there are strict laws to punish such criminals. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal is saying that such attacks cannot be tolerated. I can accept such sentiments from the common man, but why are politicians pretending to be helpless? Isn't it their job to ensure that something like this doesn't happen on the streets of Delhi or on the streets of any city in this country? One party now controls the Delhi government and the MCD. The other controls the Delhi police and has been ruling at the center for almost 8 years now. If they cannot solve this problem, who can? And let me tell you one more thing. These acid attacks are entirely preventable. The Supreme Court had banned over-the-counter sale of acids way back in 2013. The court had called such attacks worse than murder. But 9 years later, buying acid is easier than buying vegetables or groceries in this country. And why is that? Because authorities simply do not care. The system simply doesn't care. Let me tell you what that Delhi Women's Commission report has found earlier this year. It's important to know. Number one, out of Delhi's 11 districts, 2 have done 0 acid inspections in the last 6 years. This is a report that was filed by the Delhi Women's Commission. Out of Delhi's 11 districts, 2 have done 0 acid inspections in the last 6 years. 0 inspections to see if shops are illegally selling acid. 5 out of 11 districts have imposed 0 fines in the same period of time. So that's 7 out of 11 districts in Delhi where acid is still being sold. And we know that because these 2 men have procured that acid fairly easily and flung it on a girl who is now in hospital. You can buy a liter for less than 10 rupees. Store it in your pocket and ruin a young girl's life. That is how easy it is. And don't mistake this for a Delhi problem, ladies and gentlemen. Acid is being sold over the counter in every Indian city. In the last 5 years, the country has reported more than 1,500 acid attacks. In the last 5 years, I'm going to repeat this data for you. The country has reported more than 1,500 acid attacks. That's 1,500 lives affected. 1,500 completely preventable tragedies. Why do I say preventable? Because the law is in place. The apparatus is in place. But the police and district authorities simply don't care. They don't want to do their job. Neither do the politicians who lord over them. And that is the problem. Here's what we did. Here's what we did for you. We asked our reporter in Mumbai to try and get her hands on an over-the-counter acid bottle. Because this is what the Supreme Court has done, right? It has banned the sale of over-the-counter acids. What happened next when she went on this quest sums up the entire problem. Just take a look.
Right now, I'm standing in the most prestigious, most known markets of Mumbai, that is Fort. And let's try and see how easily the acid is available in markets. और सर वो लादी पोछने का एसिड मिलेगा क्या? हाँ, बहुत खराब काला काला. हाँ, टॉयलेट क्लीनर. हाँ, कितने का है? 25. This particular thing in my hand is a acid which I bought from the markets of Mumbai Fort area. It is sold at just ₹25, and we know how acid attacks are going common in the country. Acid है क्या? लादी पोछने वाला देना तो एक. I'll just show you how potent it is. I'll just pour it on floor and you can see how it reacts, how the color changes. It is immediately changing its color to red. This is the 50 rupees one acid which I have poured on floor. Now I'll put on floor the 25 rupees one, and you can see the extreme acidity in this as the color of floor is changing immediately. This is the kind of acids which are available in the market easily. We just went to shop, asked them for the acid, and they gave us for the cheaper rates. So imagine that on your face. Just for a moment, imagine that on your face. Now, it was very easy for anyone watching this report to say, "Arey, ye to bathroom cleaner hai." What is the problem if bathroom cleaner is sold and it's not regulated? You buy it for 25 rupees or you buy it for 50 rupees, and that is what it can do to a woman's face. Everyone knows this. Everyone knows that the sale of acid needs to be regulated over the counter. Is it regulated? Absolutely not. I'm going across to someone who knows what it is like for acid to be thrown on her face. Lakshmi Agarwal is joining me on the broadcast. Lakshmi, thank you very much. Also joining me is Swati Maliwal. You all know her. She is the chairperson of the Delhi Commission for Women. Thank you, ladies, for joining us. Lakshmi, आप ही के साथ start करूंगी. जो आपके साथ हुआ वो आज एक 17 साल की लड़की के साथ हुआ है दिल्ली में. बिल्कुल वही चीज. जब आपने ये बात सुनी तो आप क्या सोच रही थी? देखिए, अभी तो ऐसा हो गया है कि लगातार एवरीडे केसेस सुनने में आते हैं. अब से मैं थोड़े दिन पहले से ही एक केस हैंडल कर रही हूँ. जो 13 साल का जो लड़का है उसके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ था. बिहार में 4 लोगों ने मिलकर एसिड अटैक किया था उस बच्चे पे भी. ऐसी कई एसिड अटैक देखती हुई आ रही हूँ और बहुत दुख होता है जब मैं इन सारे एसिड अटैक को देखती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह मैं खुद ही हूँ, क्योंकि आज 17 साल की है. मैं खुद 15 साल की थी जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था. तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वही पेन रिपीट जब मैं उस इंसान को सामने से देखती तो ऐसा लगता है वो मैं ही हूँ जो ये दर्द झेल रही हूँ. Swati, how is it possible for 2 young men in the national capital to procure acid this easily? The Supreme Court guidelines are very clear. There is a ban on over-the-counter sale of acid. Firstly, acid is not banned. The retail sale of acid is not banned in India, and that is what we have been demanding for the past several years. You see, Bangladesh brought in a law. They have banned retail sale of acid. They have ensured that if somebody procures acid illegally through retail sale, that person will be punished with a jail imprisonment. And at the same time, they have also ensured that the punishment for acid attack has been increased tremendously. None of that has happened in India. We are still following the Supreme Court guidelines, which says that retail sale of acid has to be regulated. So they say that if somebody sells acid to any other person, then firstly, the seller should be licensed, and the person who's buying the acid, they should provide some photo ID proof, and there should be some registers that need to be maintained. The fact of the matter is that in Delhi today, and as well as across the country, sale of acid is extremely rampant. It is as easy to procure acid in the capital today as it is to procure vegetables. It is that bad. And the Delhi Commission for Women
repeatedly has been recommending that there should be a complete ban on retail sale of acid. In fact, 2 months back, I came out with a report in which I showed that the SDMs who are supposed to be regulating the sale of acid in the country, in Delhi especially, they are not doing the same. In 3 districts, we found out they had not even made a single inspection to ascertain whether acid was being sold illegally, and they had not imposed any penalty. So that is the state of affairs of Delhi, the capital, and that is why you are having acid being sold completely rampantly, and these people are able to procure it with impunity and just use it to completely destroy the life of a 17-year-old schoolgirl. Horrible situation. So you're saying that the law has failed the acid test, but will a ban work where regulation hasn't? I really think that will help, because you see, we have Bangladesh's example. In Bangladesh, before this law was brought in, there were even more acid attacks than what is there in India. They brought in this law and they implemented it effectively, and today the number of acid attacks have gone significantly lower. The point is that criminals are being able to operate with complete impunity. Somewhere they are feeling that they can get away with anything. And that is why you see, it was broad daylight. This girl was going to her school. These men come, they throw the acid, and now it has been almost, now it will be 12 hours very soon. And yet there are people who have not been caught. Delhi police has detained someone, but one is not sure if it is the same person. And at least 2 people were involved in this incident. So they're not even caught till now. So I think that somewhere rapists, criminals, acid attackers, they really operate with impunity, and that they are deriving from the complete state of lawlessness. You see, what is the problem? The problem is that 10 years back, Nirbhaya died. There was a gang rape that happened. It was a horrific, horrific crime, and everybody came out on the streets. There were laws that were also changed, and yet there is no implementation. Even today, there is hardly any deterrence against crime, and I feel that until there is certainty and swiftness of punishment, nothing much will change. लक्ष्मी, क्यों लग रहा है आपको कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, इतना मीडिया हाईलाइटिंग के बाद, पिक्चर बनी है छपाक आपकी लाइफ पे, इतनी अवेयरनेस होने के बाद क्यों ये कर्स जो है जिसे कहते हैं खत्म नहीं हो रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी की वो ईगो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये कि जो 2006 में PIL डाला गया, फिर 2013 में उसका रिजल्ट आया कि ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा एसिड। ऐसे तो कानून तो एवरीडे बनते हैं, एवरीडे कानून आते हैं, उसमें कितना इम्प्लीमेंट होता है? कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं है। कई कानून आ जाए, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिए गए हैं, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज भी काम हो रहे हैं? वही 4-4 साल, 10-10 साल केसों को घसीटा जाता है, और उसके बाद वहाँ पे ये दिखा दिया जाता है कि ये देखो, ये तो 5 साल 10 साल यहाँ पे तो इसने तो सज़ा झेल ली है, सज़ा हो गई है क्रिमिनल को, तो वहाँ पे चीज़ें झूठी झूठी दिखा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने क्राइम किया है और जो क्राइम के बारे में सोच रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कानून का डर ही नहीं है। कानून का एक डर भी होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। बस लोग कहीं ना कहीं, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बन के जी रहा है, उसको पनिशमेंट किया जाता है, सोसाइटी से उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन जो क्रिमिनल है उसको बहुत इज्जत से रखा जाता है, इज्जत से उसकी शादी होती है, पूरे ढोल ताशे से उसे घर पे लाया जाता है, तो उसकी लाइफ सबसे बेटर होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सोसाइटी में कोई खौफ ही नहीं है, क्रिमिनल को कोई खौफ नहीं है, कानून का या सरकार का किसी का भी कोई खौफ नहीं है। लक्ष्मी, गौतम गंभीर हैं, बीजेपी के MP हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी देनी चाहिए इन एसिड अटैक केसेस, कि whoever is a criminal, whoever is convicted of an acid attack should be hanged publicly. What is your view on that?
देखिए, मैं ये कहती हूँ कि एवरीडे कानून बनते हैं ना। मैं आज ये कहती हूँ कि सारे लोग आज ही क्यों, जब कोई अटैक होता है तभी क्यों जागते हैं लोग, उसके बाद क्यों नहीं जागते लोग? कहाँ चले जाते हैं लोग? क्यों सो जाते हैं लोग? जब भी कोई केस होता है तभी क्यों जागते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? बीच में आके क्यों नहीं बोलते हैं? सब पीछे से ही क्यों बोलते हैं? एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, इससे क्या मिल जाएगा? जो कानून आया है, किसी ने आगे बढ़ के ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि एसिड खुलेआम नहीं बिकेगा, क्यों बिक रहा है? कोई गवर्नमेंट का पर्सन आगे बढ़ के आया है, इसके इम्प्लीमेंट की बात करी है? किसी भी शॉपकीपर के पास जाके ये बोला है कि तुमने एसिड को क्यों बेचा है? कहाँ से मिला होगा? पहला सवाल, वो एसिड मिला कहाँ से होगा? जिस बंदे ने एसिड डाला है उस लड़की पे, कोई खौफ नहीं था उसके अंदर? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है, गवर्नमेंट के भी लोग हैं, कानून के लोग हैं, आएंगे 1 मिनट बात करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। आज भी यही होगा, थोड़ी देर की बात होगी और कल सब भूल जाएंगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं, वो वक्त आ ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्यों देश की सारी लड़कियां मर जाएंगी, क्राइम का शिकार हो जाएंगी, तब लोग आके आके बोलेंगे क्या कि हाँ अब बस बहुत हो गया। क्यों चुप है? जिस वक्त में जब घरों में ये चीज़ें हो रही होती है तो क्यों लड़कियां चुप बैठी होती है? इसलिए क्योंकि वो रिलेटिव होते हैं या वो दोस्त होते हैं, इसलिए चुप बैठी होती है। क्यों नहीं खुल के बोलती हैं? आगे बढ़ के क्यों नहीं आती हैं लड़कियां? क्यों नहीं बात करती हैं? क्यों माँ बाप डरते हैं? क्यों आज हमेशा लड़की निर्भया और लक्ष्मी बनेगी? क्यों आवाज़ नहीं निकलती है लड़कियों की? क्यों चुप बैठती हैं? क्यों परिवार वाले भी बात नहीं करते हैं? बोलना सबको है, सबका अधिकार है, स्वतंत्र हैं हम और हमारा पूरा अधिकार है बोलने का। और मैं आज गवर्नमेंट के भी लोगों से यही बात कहूँगी, ये सिर्फ 1 मिनट और 1 दिन की बात नहीं है या 24 घंटे की बात नहीं है। सबको आगे बढ़ के आना होगा और हमारे अधिकारों के लिए भी आपको बोलना होगा। जो आप कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, उस नियम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और ये जो कानून की बात रही, क्यों सो रहा है कानून? क्यों जजमेंट में इतना टाइम आता है? क्यों दोबारा एक निर्भया और लक्ष्मी को तैयार किया जाता है? मेरा भी ये सवाल है कानून से। सवाल तो बहुत हैं, हम सब के बहुत सवाल हैं कानून से। The law essentially has failed the acid test. I'll leave it there for the moment. Lakshmi, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. And Swati Maliwal, thank you very much for joining us. Swati has given us the example of Bangladesh. So let me tell you what that country did. In 2002, the Bangladesh government implemented tougher laws to punish acid attackers. This new law threatened the death penalty for anyone convicted of an acid attack. And guess what? It worked. It actually worked. At least 14 people were sentenced to death in the following years, and the number of acid attacks in the country have come down. More than 490 attacks were reported in 2002, but that has come down to just 8 cases in 2019. So tougher laws certainly worked in Bangladesh's case. In fact, BJP MP Gautam Gambhir is saying something very similar. He wants the accused to be executed in public. But would such a punishment actually solve India's problem? That is a question I'm going to ask Yashowardhan Azad, who is a former IPS officer. Rupa is an acid attack survivor. She's joining us as well. Yashowardhan Azad, that question to you. It's happened in Bangladesh. It has worked in Bangladesh. Is the death penalty something we need to give people convicted for acid attacks? Is that the only way to remove this curse from our society? Well, Shreya, the jury is still out whether capital punishment leads to any kind of curbing of this kind of a crime. Mind you, these crimes, most of these crimes are committed by people who have been spurned by these women. And so these are first-timers, basically. So they are not aware or they are not going to act thinking what would be the punishment for a thing like this. This is a kind of a grave provocation upon themselves because of the refusal. So that's one way of looking at it. Yes, Bangladesh is a great example, and South Asia is perhaps the capital of this entire acid attack cases. So we can certainly look into that, but look at the kind of a laxity we are seeing on the streets today. The bike, for example, which was used in today's case, did not have a number. Now you see our traffic cops, they're always more busy in checking the licenses, but they will not check even 5 steps aside whether somebody is crisscrossing the wrong way, taking the wrong lane, dangerously driving. Otherwise, cases like these bikes, for example, he must have crossed many CCTVs, he must have crossed many areas and without license plate.
and he could have been, held at any point. So what I'm saying, it's a combination of the systems working. For example, the third point which I would like to say, which you were discussing rightly now, of course, there is laxity in implementation of laws, and sulfuric acid and nitric acid, the sale should be banned. But as you rightly asked, is it possible? Tell me, is it possible to put a ban over the counter on all these things? Sulfuric acid is required for many uses. Nitric acid is required for many uses, including fertilizers. So the system, the fourth thing which I would like to say is that, how open are women today even of reporting to their parents that they are being stalked by somebody, because there is such a lot of hypocrisy involved in our society over being, getting into love with somebody, POSCO cases. And love is something beautiful. It should be encouraged. I mean, whether it's parents, whether it's, they have to accept this. And one of the biggest reasons is that the women are not reporting that somebody is harassing them. And when they go to the police stations, though the police stations have been made more, and they have been tried to be, more proactive. But then again, because of societal requirements, they don't act. Therefore, I think there are a series of reasons for this where we should make the breakthrough. That is, of course, one can discuss. रूपा, आपको लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट से ही एसिड अटैक्स रुकेंगे? एसिड की जरूरत कई कामों में पड़ती है, कई चीजों पे पड़ती है, तो क्या उनका कंप्लीट बैन पॉसिबल भी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट की बात की है, लेकिन उस रेगुलेट से कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है। गलत हाथों पे ये एसिड पड़ता है तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब इससे ये बात आपसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता। तो डेटरेंट क्या है? क्या कैपिटल पनिशमेंट डेटरेंट है? आपको लगता है एसिड अटैक्स रुकेंगे अगर ये खतरा हो कि आपने एसिड अपने हाथ में उठाया और किसी लड़की पे फेंका तो आप फांसी चढ़ेंगे? कुछ भी हो जाए आप फांसी चढ़ेंगे? मैम, मुझे नहीं लगता कि मतलब एसिड ऐसे रुक पाएगा, क्योंकि मतलब आज भी नॉर्मली आप 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल खरीद लेने के लिए जाओगे, नॉर्मली आपको एसिड मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने एसिड शूट किया था यहीं आगरा में ही, हमको 10 रुपए की 20 रुपए की इतनी सारी बोतलें हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन दुकान वाले ने एक भी बार नहीं पूछा कि आप एसिड किस लिए खरीद रहे हो, आप कहाँ यूज करोगे। बल्कि उनका फर्ज बनता है पूछने का कि आप एसिड आपको क्यों चाहिए, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ नहीं पूछा। और ऊपर से जैसे कि एक दुकान वाले ने तो हमसे ही कमेंट किया था कि आपके साथ ये क्या हुआ, तो मैंने बोला कि हमारे ऊपर एसिड अटैक हो, जो आप एसिड बेच रहे हो ना, आज उसी एसिड की वजह से हम लोगों का ये हाल है। और हम पूरा मतलब फुल स्टाफ वो एसिड खरीदने गया था। तो मतलब मुझे नहीं लगता, और एसिड दुकानों पे भले ही बिकता है, वो कहीं ना कहीं जो एसिड हम दूसरे के ऊपर डालते हैं ना, जो एसिड अटैक करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भरा होता है। दुकानों पे तो नॉर्मली एसिड बिक जाता है, जब तक हम अपनी सोच को Rupa was making an important point there, that you need to change the way men think. रूपा, आप अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। हाँ, यस मैम। हाँ, बस यही कहती, क्योंकि हमें अपने आप को बदलना है। आए दिन एसिड अटैक्स होते हैं, आए दिन हमें सुनते हैं कि आज ही दिल्ली में एसिड अटैक हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले बिहार में पता नहीं कहाँ का एसिड अटैक सुनने को मिलते हैं। जब हम ये सब चीज सुनते हैं ना कि आज वहां पे एसिड अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस जगह खड़ा साबित देखते हैं कि कुछ साल पहले हम भी उसी जगह पे थे। आज जहाँ पे दूसरी लड़की, आज वही दर्द, वही पहन, वही सब चीजें वो लड़की झेल रही है कुछ साल पहले जो हमने झेली थी। तो क्यों, कहीं ना कहीं इसमें कमी सरकार की भी है। जो हमारा लॉ है वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो है। इतने सारे जो एसिड अटैक्स, जो पुराने जो केसेस हैं, उनके अटैकर्स को जो सजा मिली थी 15 अगस्त के बाद, सब छूट गए। तो हमारी जो इतनी मेहनत है, सालों की मेहनत है, वो सब बर्बाद हो जाती है। तो अटैकर्स को तो और हौसला मिल जाता है कि अरे हमारे ऊपर हमने एसिड अटैक कर दिया, और इतना सब कुछ करने के बाद हम खुले आजाद घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ है वो बहुत स्लो है। हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत स्लो काम कर रही है। उन्हें मतलब एकदम स्पीड से काम करना चाहिए। जो जब भी कहीं ऐसे अटैक होता है तो उस अटैकर को तुरंत पकड़ा जाए। तुरंत फांसी देने से कुछ नहीं होता, वो 2 मिनट की सजा, मर जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, उस लड़की से जी से पूछो कि वो किस
दर्द से गुजर रही है, क्योंकि हम लोग सब ने ये दर्द झेला है। शायद जितनी एसिड अटैक्स लड़कियां हैं जो आज काम कर रही हैं, आज अपने पैरों पे खड़ी है, लेकिन एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक होने के बाद उसकी पूरी फैमिली झुलसती है उसमें, इस कोर्ट के चक्कर काटती है, उसके हॉस्पिटलों के चक्कर काटती है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इलाज करा पाएगी या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी। तो हम मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि एसिड अटैक के लिए उन्होंने 2013 में जजमेंट तो निकाल दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। उन्होंने बोल तो दिया कि एसिड बैन हो जाएगा, आईडी प्रूफ से आपको एसिड मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, नॉर्मल आप भी शायद खरीदने जाएंगे आपको भी मिल जाएगा। तो हमें एकजुट होकर ये मुहिम आगे बढ़ानी चाहिए। हम खुद ही एसिड नहीं खरीदेंगे तो दुकान वाला भी नहीं बेचेगा। अगर हम कहीं एसिड खरीदने जाते हैं ना, तो हमें खुद उनको समझाना चाहिए कि आप जो ये एसिड बेच रहे हो ना, शायद इस एसिड से किसी लड़की की पूरी लाइफ खराब हो सकती है, उसकी पूरी फैमिली बिखर सकती है। तो हमें एक शुरुआत हमें करनी होगी, आप और शायद हम मिलकर ये एक शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, और सरकार को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। खुद 100 में से 100% साथ देगी तो शायद तभी ये होगा। मुझे उम्मीद है, लेकिन आपके और यहाँ हमारे पे सवाल सेम है। आप लोगों को सबने फेल किया है। हाँ, और यहाँ पे मुझे लगता है कि हम सब ने उस 17 साल की लड़की को फेल किया है। मीडिया जो कि इसके बारे में बात नहीं करती है, सरकार जिसको परवाह नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनको लगता है कि कहाँ तक हम लोग ऐसे रेगुलेट करते रहेंगे, हमारे पास और कोई काम नहीं है, लॉ है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होना। तो पूरे सिस्टम ने मिल के उस 17 साल की लड़की को फेल किया है। ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव फेल्ड दैट 17-year-old girl in the national capital. Rupa, thank you very much for joining us. Yashovardhan Azad, good to get your point of view as well. It's a story we continue to track. Acid attacks are a curse on India. And unfortunately, the Supreme Court has stepped into the matter. You have had a film that has been made for awareness. You have people coming out talking about acid attacks and what they actually do. Acid attack survivors themselves are so articulate, who want you to know what happens to them once someone casually flunks acid on them. They are coming out and talking about it, and yet this curse is refusing to go away. It's something that all of us need to think about. I'm slipping into a quick break on the show. Up next, we have the story from Tamil Nadu, where the opposition